Hello बच्चों, let's read the question. The question states life cannot originate today because ऑप्शन ए रॉ मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल, हमारे पास रॉ मटेरियल्स नहीं है. ऑप्शन बी लाइफ हैज ऑलरेडी ओरिजिनेट हो चुकी है. ऑप्शन सी स्टेज दैट टुडेज एटमॉस्फेयर इज रिड्यूसिंग एंड ऑप्शन डी सेज कि टुडेज एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीडाइजिंग. मोस्टली जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस होते हैं तो मोस्टली द आंसर कम्स फ्रॉम दैट ओनली. सो लेट्स सी सी एंड डी फर्स्ट. तो सी में क्या बताया है कि टुडेज एटमॉस्फेयर इज रिड्यूसिंग. नाउ रिडक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें हाइड्रोजन इज ऑलवेज मोर इन क्वांटिटी एंड ऑक्सीजन इज लेस इन क्वांटिटी. तो प्रिमिटिव अर्थ जो होता था when evolution had not taken place या लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुआ था, तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में देर वॉज नो ऑक्सीजन या बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन हुआ करता था. एंड वी हैड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज लाइक वाटर वेपर, वी हैड हाइड्रोजन, we had carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, UV radiation or you can say UV light. High temperature हुआ करता था and we had lightning also. तो ये सारी चीजें प्रेजेंट थी बिकॉज ऑफ विच द लाइफ ऑन अर्थ वॉज पॉसिबल. That it is oxidizing. So oxidation is the process that takes place. Oxidation reaction क्या होता है? Where oxygen is present in more quantity and hydrogen is present in less quantity. So right now in atmosphere, as you know, that oxygen is present in huge quantity. So option D is going to be correct option. Even if we assess option A and B, then option A में बताया है raw materials are not available, which again is incorrect because raw materials जो हमें चाहिए are going to be primitive gases like carbon dioxide, which is also present in small quantity. We have glucose that we require, or you can say sugar. We require amino acids. We have the amino acids as well. We have glycerol and fatty acids also present. So option A will also be incorrect. And nucleotides are also required, which are also present. So that is also originated. Again, if we have raw materials and evolution can take place right now, so environmental pollution जो है does not play any role in origin of life. So of course life has already originated will not be the correct option. The correct option being today's atmosphere is oxidizing. So for the question life cannot originate today because today's atmosphere is oxidizing will be the correct option. I hope this solves your doubt. All the very best.